स्ट्राटिफिकेशंस बा स्ट्राटा बा जो श्रेणी अंतर्भुक्त में डिवाइड करू सोसाइटी को दैट इज नोन एज सोशल स्ट्राटिफिकेशंस। तो इस सोशल स्ट्राटिफिकेशंस रे हमें क्लास स्ट्रक्चर भी देखी थाउ, कास्ट स्ट्रक्चर भी देखी थाउ। कास्ट द्वारा श्रेणी रे लाइक सोसाइटी रे श्रेणी भाव रे डिवाइड करा जाए, कास्ट द्वारा भी डिवाइड करा जाए। ओके, क्लास गोटे हुए हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड ओके एंड और वी कैन से वैश्य शूद्र जो प्रथा हम रही आसी से हिसाब रे मध्ये डिवाइड करा जाए। एमती बहुत सारा रही एंड ये होची वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन, खाली इंडिया रे देखा जाए सबुतरे ये देखा जाए। तो फर्स्ट क्लास में सोशल स्ट्राटिफिकेशन और टोटल कॉन्सेप्ट देखितलु। आज आम जानिबा दी जण फेमस सोशियोलॉजिस्ट को हिसाब रे सोशल स्ट्राटिफिकेशन कोन एंड ए सोशल स्ट्राटिफिकेशन वर्ल्ड वाइड फेनोमेना से केमती भाव में डिवाइड करते ताको हमें डिटेल देखिबा। परंतु आज हमें डिस्कस करबा वेबर को विषय रे एंड कार्ल मार्क्स को विषय रे। सो कार्ल मार्क्स जे थिले ताको हमें जानचे कि जेमती ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किए थे दादा भाई नारोजी, सेमती कार्ल मार्क्स मध्य धरा जाए सोशियोलॉजिकल थॉट्स रे सी ग्रांड ओल्ड मैन एंड बहुत ही पुराना लाइक सी जो शिष्य थे हेगल्स कर ये जर्मनी रु बिलोंग करती। हेगल्स कर जो शिष्य थे जो डिसिपल्स थे तो हेगल्स से टाइम रे जिम सुनिछु हमें कम्युनिस्ट पार्टी कथा आपण माने प्राय सुनिथिबे मार्क्सिज्म। सो मार्क्सिज्म फॉलोअर्स माने से माने बेसी इकोनॉमिकली थिंकिंग करंती लाइक बॉटम टू टॉप अप्रोच रे लाइक सोसाइटी रे जो माने भी तळ तळ श्रेणी रो लोक माने से माने जदी डेवलप हेबे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियलिस्ट माने डेवलप हेबे जोटा कि लाइक कार्ल मार्क्स कहथिले बॉर्जियस एंड प्रोलेटारिएट। क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग। मार्क दिस वर्ड सोशल रैंकिंग रो माने स्ट्राटिफिकेशन माने हो जे ये गोटे सिस्टम कहारो ना सोशल रैंकिंग इन्वॉल्विंग रिलेशंस एंड सुपीरियरिटी एंड इनफेरियरिटी के सुपीरियर अच्छी सोसाइटी रे मोस्ट के इनफेरियर अच्छी ताकू ही दर्शाया पई स्ट्राटिफिकेशन फार्मूला आसे। तो फर्स्ट हमें देखिबा कार्ल मार्क्स को स्ट्राटिफिकेशन फार्मूला कोन कहूची। कार्ल मार्क्स इज द फॉरमोस्ट आर्किटेक्ट ऑफ डायलेक्टिकल अप्रोच जोटा कि सी बोरोर कतले का पाकरू तांकर जे गुरु तले हेगल्स। ओके, हेगल एंड तांकर जेते सब शिष्य थिले तांको भितरु यंगेस्ट बा यंग ग्रुप रे ये थिले हेगेलियन, यंगेस्ट हेगेलियन कार्ल मार्क्स थिले, यंग थिले से टाइम पीरियड रे। So his theory is not restricted to economic understanding and analysis only because आमे पूर्वरु जो धारणा छी आपण जदी इकोनॉमिक्स रे पढथिबे कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल इज वेरी फेमस। दास कैपिटल और कैपिटलिज्म विषय रे कहचंती खास करी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पई ये इंपोर्टेंट, किंतु सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जदी हमें कार्ल मार्क्स को देखिबा सोशल थिंकिंग रे कार्ल मार्क्स कोन से भी जदी सोसाइटी रे चेंज आसुची ता पई दाई कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो माने कैपिटलिस्ट थांती। कार्ल मार्क्स एटा भी कहंती कि सोसाइटी रे चेंजेस जो फ्यूडलिज्म आसिला से जितले नॉर्मली हमें समाज रे सुधार करलु सेतले फ्यूडलिज्म आसिला किंतु समाज जितले स्टीम इंजन आसिला सेतले कैपिटलिस्ट माने आसिले। ओके, स्टीम इंजन जेबेटू आसिला कैपिटलिस्ट आसिले माने इंडस्ट्रियलाइजेशंस डेवलप हला। जितले इंडस्ट्रियलाइजेशंस डेवलप हला ता माने कैपिटलिस्ट सहित ऑटोमेटिकली लेबर क्लास गुडे जन्म नेला। जितले लेबर क्लास गुडे जन्म होची कैपिटलिस्ट माने ताको कोन कहउछन्ती शोषण करछन्ती। एटा कार्ल मार्क्स कर चिंताधारा थिला एंड से एटा भी कहथले जते पर्यंत लेबर क्लास निजो भितर कॉन्शियसनेस न आनीछि सेते पर्यंत सी केतले लोअर क्लास रु हायर क्लास पर्यंत बाय लोअर स्ट्राटा रु हायर स्ट्राटा पर्यंत से डेवलप करि परिबनी। ऑलवेज ताको द्वारा से लाइक टॉर्चर होतबो सो बेले। सो हिज थ्योरी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ओनली, इट इज ए वाइड स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। से बड़ फ्रेम रे सोसाइटी को देखंती कौन रही से सोसाइटी रो थ्योरी रे। सो बेस इज इकोनॉमी, सबुरो मूल रे से इकोनॉमी को रखिचंती। इकोनॉमिकल वेल्थ को से सबले रखितांती तळे बा सेटो को प्रायोरिटी देथांती एंड सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पॉलिटी, रिलीजन एंड कल्चर एटसेट्रा। किंतु सबुरो मूल के इकोनॉमी, बेस रे होची इकोनॉमी। जदि इकोनॉमी स्ट्रांग अछि, इकोनॉमिक भलो अछि ताले समाज रे सब श्रेणी लोक माने भलो रहबे। इकोनॉमी जदि गोटे साइड रो पर्सन मानन को बेसी माने वेल्थ जदि गोटे साइड रो पर्सन मानन को बेसी रही छि ताले ऑटोमेटिकली सी कोन करबो सप्रेस करिया पई चाहिबो सब बेले लेबर क्लास को। सो मार्क्स स्ट्राटिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस, सिस्टम ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जहां भी प्रोड्यूस होची बा प्रोडक्शंस प्रोसेस रे एंड द स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय पर्सन्स पोजीशंस। प्रोडक्शन हिसाब रे जो कंपनी रे आपण देखिथिबे कि स्टेटस टा केमति दिया जाय से कंपनी रो निजरो वर्क एथिक्स जोगु दिया जाय।
ओके पोजीशन केमती मिले निजर काम को श्रेणी से काम करछि सो प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय पर्सन पोजीशन in the very system in terms of ownership and non ownership in the means of productions जो प्रोड्यूस आपण करूछंती से प्रोडक्शन जो कंपनी हो किंबा प्रोडक्शन सेक्टर हो सेतरे जो श्रेणीभुक्त करायछि निज निजर पोजीशंस निज निजर स्टेटस ओके से सब को से मेंशन करूछंती सो से सेही आधार रे कोन कहउछंती द ओनर आर नेम्ड एज बोर्जियस जो माने ओनर जो माने कंपनी ओनर जो माने भी इंडस्ट्रियलिस्ट माने से माने होचंती बोर्जियस एंड द नॉन ओनर कॉल्ड एज प्रोलिटेरिएट्स जो माने नॉन ओनर मा जो माने वर्कर कर्मचारी जो माने अछंती ताकू से कोन कहउछंती प्रोलिटेरिएट ये गोटे फास्ट से डिवाइड करले स्ट्राटिफाई करले ओके गोटे होची बोर्जियस क्लास जोटा जो माने कि होचंती कैपिटलिस्ट माने लाइक बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट माने जो मानकर इंडस्ट्री रो ओनर माने एंड जो माने लेबर क्लास रहले वर्कर रहले एम्प्लॉय रहले से माने होचंती प्रोलिटेरिएट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स तो एई वर्ड गुडी को बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम रे जते आपण लिखिबे तो एई वर्ड गुडी को निहाती भाबरे मेंशन करबे रादर आपण खाली जदी लिखि देबे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर ऑफ इंडस्ट्री सेगुडा कते एप्लीकेबल होबनी बिकॉज़ आपण सोशियोलॉजी लिखुचंती तो सोशियोलॉजी रो स्पेसिफिक टर्म एंड पॉइंट्स सब लिखिया पई आपण को पड़िबो सो बोर्जियस माने होची कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरियट्स माने होचंती नॉन ओनर बा लेबर क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सो से कोन कहउछन क्लास इज ए सोशल रियलिटी क्लास गोटे सोसाइटी रो रियलिटी okay a real group of people with a developed consciousness of its existence जदि रियल ग्रुप ऑफ पीपल जदि किछि लोकंकर समूह ग्रुप निज भितर कॉन्शियसनेस अछि तांकर एग्जिस्टेंस सोसाइटी रे कोठी अछि को पोजीशन अछि तांकर गोल कोन कैपेबिलिटीज तांकर केते दक्ष अछंती से हिसाब रे सोसाइटी रे सेमन निजर परिचय क्रिएट करबे सो इट इज लाइक ए लुकिंग ग्लास ऑफ सोसाइटी बाय व्हिच वन कैन सी इट्स सोशल फैब्रिक एंड इंटरनल डायनामिक्स सोसाइटी रो जो आपण चिंता करंतु इट इज लाइक ए लुकिंग ग्लास तो ग्लास जेमती सोसाइटी हमकु से कोन कहउछंती सोसाइटी गोटे ग्लास जोतरी कि हम निजे पिक्चर निजे देखिबा हम निजे पिक्चर सेते बेला हमकु बेटर देखा जिवो जदी हम निजो भितर कॉन्शियसनेस आनिबा जदी हम कॉन्शियसनेस आनुचो ऑटोमेटिकली ए कॉन्शियसनेस ता सोसाइटी द्वारा रिफ्लेक्ट बैक हबो ओके दैट्स व्हाई से एटा मेंशन करछन सो मार्क्स हार्प्ड अपॉन यूनिटी एंड प्रोलिटेरिएट अगेंस्ट द बोर्जियस ये सबले दर्शाउतले कि प्रोलिटेरिएट्स मान को भितर यूनिटी थिबा दरकार जो माने लोअर क्लास पीपल्स माने एम्प्लॉय माने तांको भितर यूनिटी माने भला बुझामणा एंड सब बेले से माने रिगोरसली भाबुतबा दरकार कि तांको कॉन्शियसनेस डेवलप होबा दरकार कि से माने धीरे धीरे ग्रो करिवे ओके तांकर जो वर्किंग प्रोफेशन बा शेयर बा स्किल्स सेतरे डेवलपमेंट आनिबे सो दैट कोन होबो गोटे स्टेबल है कि रहबनी कंडीशन माने जो माने कि वर्कर थिबे से माने वर्ष वर्ष धरि कि पीढ़ी बाय पीढ़ी रहि कि से माने वर्कर हिथिबे सेमति नै निज भितर कॉन्शियसनेस आसिले ही जने ग्रुप रो ही टोटल से चेंज हो सोसाइटी रो आउ गोटे स्टार्टअप बा आउ गोटे श्रेणी को से ऊपर को जीवो ओके सो देन बोर्जियस टू डिफेंड देयर इंटरेस्ट एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दिस वाज नेसेसरी एज द रूलिंग क्लास बोर्जियस suppressed the autonomy of idea culture and religion and politics. Now, Marx viewed class differentiation as the crucial determinants of social and economic and political inequalities. Class determination, class wise जदि हमें divide करछु ताले से सब जगह affect करछु society रे भी affect social manner भी affect करछु economic manner भी affect करछु political inequalities भी create करछु according to Karl Marx there is always a dominant and a subordinate class समाज रे सब बेले गोटे dominating class रही आछि गोटे subordinate class रही आछि बा suppressing class रही अछि गोटे inferior factor अछि गोटे superior factor अछि सोसाइटी रे सब बेले एटा लागू होई आछि class जे rule कोछि that is known as ruling class okay and now Max Weber on stratification Max Weber कोन कहले Max Weber in party so class रे से कोन कहउछंती class is an economic phenomena society रे जो class श्रेणी समाज रे जो ग्रुप भीतर श्रेणी जो विभाग हेची class is an economic phenomena a product of the market situation which implies the competition among different classes such as buyers and sellers buyers और sellers मान को भीतर एबे लाइक कंपटीशन चलछि ना कोन मार्केट सिचुएशन को बेस करी प्रोडक्ट एबे केते ग्रो करिवो केते लेस ग्रो करिवो मोर ग्रो करिवो सेटा डिपेंड करछि का ऊपर ना इंप्लाइज द कंपटीशन
केते कंपटीशन माने डिमांड अनुसार सेटा फुलफिल होउची कि नाही सो बायर्स एंड सेलर्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जे सी क्रिएट करछंती ओके ताकू से हिसाब दर्शाछंती नाउ कम टू स्टेटस स्टेटस इज रिकॉग्निशंस ऑफ ऑनर और सम्मान को सम्मान हिसाब से देखुछंती पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट क्लासेस समाज रे सबु लोकन को बा ग्रुप को वेरियस ग्रुप रे डिवाइड कराची श्रेणी डिवाइड कराची सो दैट स्टेटस ग्रुप बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर जो माने हायर हायरार्की रु बिलोंग करथिबे हायर हायरार्की माने उच्च श्रेणी जो माने बिलोंग करथिबे से माने सम्मानित हेबे सब बळे एंड व्हिच इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ ए रेंज ऑफ सिंबल इन ए गिवन सोसाइटी जो माने आइडेंटिटी ताकर सेटा मेंटेन करिवे लाइक आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ ए रेंज ऑफ सिंबल इन सोसाइटी तांको देखि कहबे कि ये हायर क्लास माने से गोटे पैरामीटर सेट हिजबो कि ए माने होचंदी हायर क्लास माने तांको तुलना रे बाकी को माने हे गेले लोअर क्लास से गोटे स्टेटस टाइप रो से मेंशन करछन देन नेक्स्ट पार्टी party implies a house of power what is the group को total power दे दिबा okay house of power और power is the keynote of Weberian theory तो वेबर को मुख्य कांसेप्ट ला कि पावर ऊपर so Weberian theory of stratification power may be for the sake of power or it may be economical determinant power मे बी हिते पारे कि लाइक समाज रो सोसाइटी रो गोटे पावर रही और एल्स का पाकर जदी अधिक वेल्थ अछि से हिसाब रे बा इकोनॉमिकली गोटे पावर आसे एंड द इकोनॉमिकली डिटरमाइंड पावर इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल विथ द सोशल और लीगल पावर सो इकोनॉमिकल पावर से सब स्टेबल नुहे अकॉर्डिंग टू वेबर से सब इंटरचेंज होता है जोटा कि सोशल और लीगल पावर अछि से प्रायतः स्टेबल थाए सो इकोनॉमिक पावर मे बी consequence of power existing on other groups right now Weber present the categorizations of society in four ways चारिटा वे रे से कैटेगरी को डिवाइड करछंती कोन ना ना द propertied upper class okay and the propertyless white collar class the petty bourgeois and the manual working class एठी गोटे क्लियर कट आपनकर डिफाइन हेजबो गोटे जेंति आपन सुनिथिबे कि व्हाइट कलर जॉब देन जो यस आपनकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जे इकोनॉमिक पार्ट रे आपन जानथिबे कोन रहिछि इकोनॉमिक्स रे के याकू रिलेट करि परछंती प्राय तो क्लास रे पढाई तो आपनकर इकोनॉमिक्स रे प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्विनरी क्वाटनरी ए जो टाइप रो जॉब माने आमी जदी जिबा द प्रॉपर्टीड अपर क्लास जो मानको पाखरे वेल्थ अछि से माने ऑटोमेटिकली सोसाइटी रे हायर क्लास रु बिलोंग करिवे ही करिवे जो माने पाखरे वेल्थ अछि टंका बहुत सारा अछि इंडस्ट्रीज अछि so they are known as propertied upper class so they were the upper class people who had an immense amount of property which was their way of collecting revenues from tenants for example a landlords zamindars mane collected revenue from tenants when they gave a portion of their land to them now come to propertyless white collar worker एबे सेई जो लैंडलॉर्ड पाखरे जने गुमास्ता टाइप रो थांती आपण जानथिबे जमीदार को पाखरे जने गुमास्ता थांती तांकर कैलकुलेशन करिया पई ओके सेटु हमें कोन करबा कि लेट से राजा को पाखरे जने मंत्री थांती किंतु स्टिल से मंत्री पटी न थाए राजा तांको सब अधिकार देई थांती किबा जमीदार ताको सब अधिकार देतै माने हाईली पेड जॉब रे से रही थांती ओके लेट से गोटे एमएनसी कंपनी रे आपण जति सीईओ अछंती बट आपण तो ओनर नाहंती से कंपनी रो सीईओ अछंती राइट हाईली पेड हेतै पारंती किंतु आपनकर सेही कंपनी रो ओनरशिप नाही बा से टोटल प्रॉपर्टी ऊपर आपण हक नाही जदि हमें कॉमनली बुझिबा सो दे वर स्किल्ड लेबर से माने मोर स्किल्ड लेबर they were skilled labor who sat behind the table to earn proper salary and mostly middle class people were seen doing the white collar job जो माने मध्यवित्त श्रेणी लोक माने मिडिल क्लास फैमिली रु से माने व्हाइट कलर जॉब करंती and comparing with the present situation workers working in MNCs or power plants can be termed as white collar seeking employees these are known as propertyless white collar workers now third term रे हम देखुछु the petty bourgeois ता तळकु जमान रहले they were belonging to lower class people Marx was in favor of highlighting their declining position of the societies right
डिक्लाइनिंग पोजिशन जो सोसाइटी कहीं बिकज भितर कॉन्शियसनेस आसी पारुनी यूनिटी आसी पारुनी ओके तापर देखिबा मैनुअल वर्किंग क्लास दे कैन बी called as the lower class medium also popularly known as blue collar job at the time. They had to do work manually and were paid less than the necessity. ତାଙ୍କର କାମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି କମ ସାଲାରୀ ମିଳେ ବହୁତ ହି କମ ୱେଜ ମିଳେ ତ ୱେବରଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇ ହିସାବରେ ସୋସାଇଟିକୁ କାଟେଗୋରାଇଜ କରାଯାଇଛି ଫୋର ୱେଜରେ ଫୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ୱେରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି so it has been said that Weber's theory of stratification is a reaction of Marx theory of class. कार्ल मार्क्स जोटा कहते ताकू जस्ट खाली गोटे स्टेप आगु नहीं कि वेबर मेंशन करछंती सब किसी स्ट्रैटिफिकेशन बा जो फोर क्लासेस रे से डिवाइड करछंती सो वी कैन से दैट वेबर इज द फाउंडिंग फादर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एनालिसिस which developed best in USA. Marx on the other hand was not a stratification theorist. For him the opposition and contradiction found in modes of productions